Let us go to exercise 3.3, question number 5. Exercise 3.3, question number 5. There are two regression lines given to us. We are supposed to find out correlation coefficient, and second part, standard deviation of x upon standard deviation of y. Okay, so the two regression lines are given to you. Two regression lines are given to you, right? So from these two regression lines, will you tell me which is x on y and which is y on x? Directly बोल सकते हो without calculating anything. Can you comment? No, ऐसे directly हम लोग नहीं बोल सकते कि कौन सा x on y है कौन सा y on x है. We have to proceed with the identification process. Okay, line 1, line 2. कल का लेक्चर याद करो. Take all the terms on the left hand side, but then already some terms left hand side में है. Line 2, 2x plus 2y minus 12 equal to 0. Fine. Slope m1, slope m2, minus a upon b, minus a upon b. यही किया था हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, राइट? स्लोप m1 एंड स्लोप m2. ओके, स्लोप m1 में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले ब्रैकेट में व्हाट आर वी सपोज टू फिल अप? 2 और नीचे 3. So this is minus 2 by 3 and this is minus 2 by 2, which is minus 1. Are we supposed to calculate this in decimal? Try to recollect yesterday's class. Are we supposed to calculate this in decimal? No. When it is m1 and m2, we don't have to calculate it in decimal. Whenever we are calculating modulus of m1 and m2, whenever we are calculating modulus of m1 and m2, इसको decimal में calculate करो. Minus 2 by 3. Negative sign will get eliminated due to the modulus, right? What about 2 by 3? What is the answer for 2 by 3? What is the answer for 2 by 3? डेसिमल में मॉड्यूलस को कैलकुलेट करना है, बोलो. 0.67. Okay, modulus of m2, this is 1, this is 1, right? Please copy till here. Everything was discussed. All these steps were discussed yesterday, and yesterday I commented that today's lecture will be based on such kind of problems, right?
If you're done with this, let me know. So modulus of m1, modulus of m2. Which one is greater? मॉडुलस ऑफ m2 इज ग्रेटर और कंपैरिजन कभी भी मॉडुलस का होगा. कंपैरिजन कभी भी मॉडुलस का होगा. राइट. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट वी विल मेक? इसके आगे क्या लिखेंगे? byx. byx is equal to smaller slope without modulus. Smaller slope without modulus, which is equal to m1, which is equal to m1, which is equal to क्या लिखूँ m1 के आगे? m1 के आगे क्या लिखना है? जल्दी बोलो. -2/3. वेरी गुड. -2/3. m1 from line 1. Line 1 is y on x. bxy reciprocal of larger slope without modulus. Okay. 1 upon m2, 1 upon -1, which is -1. m2 from line 2. Line to x on y. Okay. If you have copied this, let me know. Waiting for your reward. ये देखो लास्ट स्लाइड. Should I go to the next slide?
The person who asked, should I go to the next slide? ये देखो, this was the next slide. ये हो गया सबका कॉपी करके. Next slide. Therefore, R byx into bxy. R is the correlation coefficient. Minus 2 by 3 into minus 1. R is equal to root 2 by 3. But then I'll put a minus sign over here. R is negative since byx, bxy are negative. Have you understood this? इसको रूट में ही छोड़ दो because decimal value है. Fine. Perfect square नहीं है अंदर रूट के. Okay. If you have copied this, I will proceed. Okay. They are asking standard deviation of x upon standard deviation of y. They are asking standard deviation x upon standard deviation y. You can take any one. byx upon byx का फॉर्मूला ले सकते हो या फिर bxy का फॉर्मूला ले सकते हो. You can take any one, byx या फिर bxy, but then this time I'll take a bxy because directly we'll get standard deviation of x upon standard deviation of y. Do you agree with me? Okay. The value between the round brackets is required. The value between the round brackets is required. bxy. What is bxy? This is minus 1 equal to minus root 2 by root 3. ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? Can I write r as minus root 2 by root 3? Mathematically correct है. Correct है. Why not? It is correct. Okay. रूट ऐसा स्प्लिट हो सकता है. रूट ऑफ ए अपॉन बी कैन बी रिटन एज रूट ए अपॉन रूट बी. बाहर माइनस साइन तो रहेगा पहले से था वो. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में रूट्स स्प्लिट हो सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. सो माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट माइनस रूट 2 इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई.
standard deviation of x, standard deviation of y equal to, can I write root 3 by 2? Can I write root 3 by 2? माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया. रूट 3 अपॉन रूट 2 इज रूट 3 by 2. बोलो, understood? Have you understood the solution for these problems? टेक्स्ट बुक का आंसर पता नहीं मुझे, ये तो राइट है. टेक्स्ट बुक में बहुत सारा एरर्स है, डोंट वरी. कल हम लोग ने 7th प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि होमवर्क के लिए दिया था मैंने तुम लोग को? लेट अस सॉल्व 7th प्रॉब्लम. होमवर्क के लिए दिया था लेकिन थोड़ा सॉल्व कर लेते. 3.3 क्वेश्चन नंबर 7. The two regression lines are x minus 4y equal to 5 and 16y minus x is equal to 64. 16y minus x is equal to 64. Find means of x and y. Find means of x and y. कैसे फाइंड आउट करेंगे मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई? हाउ विल वी कैलकुलेट द मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई? Simultaneously solving both the equations. Simultaneously solving both the equations. तो वो पार्ट तुम लोग होमवर्क के लिए कर लेना. सेकेंड पार्ट आर हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो लेट अस प्रैक्टिस दिस. कम ऑन. 7th प्रॉब्लम आर का पार्ट. लेट अस प्रैक्टिस. लाइन 1, पहले x बाद में y बाद में कांस्टेंट. ओके. लाइन 2, पहले x बाद में y बाद में कांस्टेंट. स्लोप माइनस a बाई b. स्लोप m2 माइनस a बाई b. 1 upon minus 4. 1 by 4 minus 1 upon 16. 1 by 16. माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है दोनों साइड पे. नाउ मॉडुलस ऑफ m1. मॉडुलस ऑफ m2. इसका आंसर क्या है, कोई बताएगा मेरे को? 1 by 16 का.
Is it 0.06? Up to two decimal places is fine. The answer up to two decimal places is fine. Please copy till here. If any doubts, any queries, please ask. Any doubts, any queries with regards to this, please ask. Now we'll go ahead with the comparison. Comparison. Modulus of M1, modulus of M2. Every time the modulus will be compared. The modulus terms will be compared. Which one is greater? M1 is greater. Modulus of M1 is greater. X किधर से आया बेटा? Copy till here, please. Okay. So we'll proceed now. आगे का steps तुम लोगों को पता है. Byx is equal to smaller slope without modulus. Smaller slope without modulus. Now this time which is the smaller slope? M2. But then without modulus. So we are supposed to write M2 without a modulus sign. 1 upon 16. M2 is coming from line 2. So what is line 2? Anyone? M2 coming from line 2. So what is line 2? Y on X. Correct. Byx बोल रहे हैं ना, so it is Y on X. Bxy. Reciprocal of greater slope without modulus. Reciprocal of the greater slope without modulus. So this is equal to 1 upon m1. So is it equal to 4? Can I write 4? 1 upon m1 को 4 लिख सकता हूँ मैं. Reciprocal of 1 upon 4 is 4, right? Have we written this? Are there any queries? M1 from line 1. Line 1
X on Y. We are supposed to copy this. Okay. R root of byx into bxy. What is byx? कितना है byx? 1 upon 16, right? And what is bxy? Bxy is 4. So this is root 1 upon 4. R is equal to half. Which is equal to half. अभी half तो divide कर सकते हैं ना. 0.5. But then which sign will be given to R? Will we assign a positive sign or negative sign? Positive sign. Correct. Reason. R is positive since byx and vxy are positive. R is positive since byx and vxy are positive. Okay, have you copied this? Chalo, let us proceed now. Please show the previous slide. क्या यार तुम लोग इतना टाइम लेते हो. और ये स्लाइड दिखाने का भी जरूरत नहीं. You should be in a position to solve it on your own. Are we practicing enough this kind of problems? Is the procedure clear for you? Okay, let us go to the miscellaneous exercise. Let us go to the miscellaneous exercise. Question number 4. Question number 4 का 6th you can take it for homework. 4 का 6th part you can take it for homework. Let us proceed with 4 का 7th. Solve the following का 7th one. Is that fine? Solve the following का 7th. Yeah. So miscellaneous exercise. Question number 4.
Solve the following. Seventh, ये धैर्य कुछ भी पूछता है तू। एक्स बार और वाई बार कैसा मिलता है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके ना। फिर ओ हाँ, सॉरी भूल गया था। तुम लोग ने कभी एलमंड के बारे में सुना है क्या? एलमंड, हैव यू हर्ड ऑफ एलमंड्स? क्या बोलते हो उसको हिंदी मराठी में क्या बोलते हो? गुजराती में भी? अच्छा लगता है तुम लोग को वो खाने के लिए? डू यू एंजॉय ईटिंग दैट? हाँ, वो सब लोग खाने का अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, ठीक है। पूरा खाना छोड़ के सिर्फ एलमंड्स मत खाओ लेकिन, ओके। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर well-being, everything. Okay, good. Yes. Question number 4 का sub question 7. The equation of two lines of regression are given to us. There are two lines which are given to you. आपको मिला वो क्वेश्चन मिला? everybody is able to get that question from the miscellaneous exercise. Question number 4, sub question 7. So there are two lines given to us. Line 1, line 2. ठीक है, 3x plus 2y minus 26 equal to 0 and 6x plus y minus 31 equal to 0, right? All the terms on the left hand side, पहले x बाद में y बाद में constant। पहले अगर y का टर्म दिया रहेगा तो भी x लिखने का, then also you are supposed to calculate x, write x, sorry, okay। अच्छा, फर्स्ट पार्ट मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मीन्स ऑफ x एंड x बार एंड y बार, वो मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, दैट यू डू इट ऑन योर ओन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। या सो स्लोप m1 minus a by b, slope m2 minus a by b, so this is 3 by 2, hence it will become minus 3 by 2, 6 by 1, this will be minus 6, am I correct? बराबर लिखा है मैंने कि कुछ गलत लिखा है? हेलो, करेक्ट, ओके। मॉडुलस ऑफ m1 माइनस 3 बाई 2, आंसर क्या लिखूँ इसका बोलो फाइनल डेसिमल में? मॉडुलस कभी भी डेसिमल में करने का, माइनस साइन भी चला जाएगा ड्यू टू मॉडुलस, ओके। 1.5, दिस इज 6। अभी क्या करूँगा, कंपैरिजन m1 m2, करेक्ट है क्या? हैव आई रिटन करेक्टली? दोज हु आर कॉपिंग, कॉपी करो, जिसको आगे प्रोसीड करने का है कर लो।
Okay, next part. Byx. Now I'm not going to write this. तुम लोग लिखो. Smaller slope without modulus, which is equal to anyone? Smaller slope कौन? M1. Okay, without modulus. आंसर क्या है इसका? M1 कितना है? -3/2 करें. Okay, M1 from line 1. Line 1 y on x. Vxy. Statement तुम लोग को लिखना है. So many times we have written the statement, but then you write it ताकि आपके दिमाग में रहेगा वो. ठीक है. कितना लिखूँ ये? 1/m2. What should I write? -6. So m2 x on y. Sorry, m2 is line to line to x on y. कोई तो मुझे -6 बोला, इसके लिए मैंने -6 लिखा. इट शुड बी रेसिप्रोकल ना. -1/6. Reciprocal of m2. m2 is -6. तो 1/m2 will be -1/6. एरर मत करो ऐसे. Okay, should I proceed? How to calculate r? R is equal to root of byx into bxy. -3/2 -1/6. So is it root 1/4? Have I written correctly? Root 1/4 is half. But then what is the value of r? -0.5. Why we are writing half का तो value 0.5 रहता है. But then why we are putting a minus sign? Why are we putting a minus sign? You have to mention the reason. Reason हमेशा लिखने का. R is negative since byx and bxy are negative. R is negative since byx and bxy are negative. Yes, Dharya, please ask. Why can't we take decimals? कहाँ पे? byx and bxy में. Okay, now see byx and bxy सबसे पहला पूछा नहीं है अपने को, तो उसका डेसिमल वैल्यू नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा. अगर उसका डेसिमल वैल्यू तुम लोगों ने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा. रूट के अंदर का कैलकुलेशन विल बी अ बिट टीडियस. फ्रैक्शंस की वजह से कैंसिल हो रहा है. देखो 3 और 6 कैंसिल हो रहा है. सर इफ वी हैव टू राइट दैट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट?
एवरीथिंग इज गिवन। फॉर्मेट मैंने आपको एक फिक्स्ड फॉर्मेट दे के रखा है, और क्या लिखना है आपको? व्हाई आर यू ओवर थिंकिंग ऑन दिस? हाँ, वो स्टेटमेंट लिखना है ना। आर इज नेगेटिव इफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इज नेगेटिव, यू आर सपोज टू राइट दैट। मैंने बोला है तो बोला है, डोंट आस्क व्हाई। ठीक है। या सो आई थिंक वी हैव completed the second part of the problem. Let us go to the third part. Estimate y for x is equal to 2. थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एस्टिमेट का मतलब क्या है इंग्लिश में बोलो? वी हैव डिस्कस दिस। प्रेडिक्शन, वी आर सपोज टू फाइंड। ओके, so find what are we supposed to find? Y when x is equal to 2. Find y when x is equal to 2. Who depends on whom? Y depends on x. Y depends on x. Therefore, use line. Which line? If y is dependent on x, we are going to use line y on x. Right? What is line y on x? Have we identified which is line y on x? Y minus y bar b y x minus x bar नहीं करने का, ऑलरेडी हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है। देन व्हाई नॉट यूज इट? यूज क्यों नहीं करने का फिर? कौन सा वाला लाइन y on x है? जल्दी बोलो। विच लाइन इज लाइन y on x? लाइन वन की लाइन टू? लाइन वन की लाइन टू। करेक्ट। इसके लिए मैंने वो बॉक्स में लिख के रखा है आपके लिए, सो दैट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इफ दे ऑकर, यू विल नॉट वंडर कि अगला स्टेप क्या रहेगा। राइट? सो आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड यू क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। नाउ लाइन वन ना, लाइन वन की लाइन टू? लेट मी चेक। लाइन वन is line y on x. Line 1 is line y on x. What is line 1? Line 1 is 3x plus 2y minus 26 equal to 0. Therefore, 3x plus 2y minus 26 equal to 0. Therefore, 3 into 2 plus 2y minus 26 equal to 0. Please solve this and tell me what is the value of y. I am not going to solve this. तुम लोग को solve करनी। x के जगह पे मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे। y कितना है? y is 10. Is that okay?
बोलिए, इज दिस फाइन? Okay, let us proceed to the fourth part of the problem. Sub question 4. They are asking variance of x if variance of y is equal to 36. Fourth part of the problem. I hope everybody has copied this and calculated the value of y. Calculated the value of y. Okay. Fourth part. So variance of y is equal to 36. Immediately, what are we supposed to calculate? Variance of y is equal to 36. Immediately, what are we supposed to calculate? Standard deviation. Very good. So standard deviation of y, root of variance of y, root of 36. स्टैंडर्ड डिवीजन हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये कल मैंने बताया था. मैथमेटिकली वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू इन आवर कैलकुलेशंस. हैव आई कम्युनिकेटेड दिस? राइट. ओके. दे आस्किंग वेरिएंस ऑफ एक्स. वेरिएंस ऑफ एक्स तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पहले स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. फॉर दैट रीजन व्हाट शुड आई टेक? शुड आई टेक बी वाई एक्स और शुड आई टेक बी एक्स वाई? एनीथिंग विल डू. एनीवन, कोई भी एक ले लेना वैल्यू. सो लेट्स टेक बी वाई एक्स आर sigma y upon sigma x, r sigma y upon sigma x. What is byx? What is byx? -3/2. क्या मैं r को माइनस हाफ लिख सकता हूँ for the purpose of calculation? Instead of writing 0.5, can I write minus half? क्यों नहीं लिख सकता हूँ? 0.5 का मतलब हाफ ही तो है. ये देखो, 0.5 का मतलब हाफ है, बट देन पुट अ माइनस साइन. माइनस साइन आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? माइनस साइन तो आएगा. r नेगेटिव है ना. ओके. फिर 6 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. कैलकुलेट करो चलो. प्लीज कैलकुलेट दिस एंड टेल मी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का फॉर्मूला का वैल्यू. कैलकुलेशन एरर मत करो. यू पीपल आर कमिटिंग एरर्स विच इज नॉट गुड. माइनस साइन दोनों साइड से कैंसिल. 2 1 जा 2 3 जा. 3 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x. 3 3 कैंसिल. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इक्वल टू 2. Many students have reverted with half. How it will be half? Don't be in a hurry to solve the question, okay? हो गया तो मुझे बोल देना. We'll start further then. Last step.
Have we copied this? ठीक है. Standard deviation of x, square root of variance of x, equal to equal to variance of x equal to 4, squaring both the sides. Have you understood this? ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? Okay. Question number 11 homework. Question number 11 is homework. Fourth का question number 11 is homework. Same type of problem. कुछ अलग नहीं है. Okay. But then line 2 कैसा लिखोगे आप? What will you write in place of line 2? मुझे बताओगे तुम लोग? How will you present line 2? line 2 का स्टार्टिंग में लिखने का तरीका क्या रहेगा? जैसा दिया वैसे ही चुपचाप लिखने का क्या? How to write line 2? Tell me, come on. M2 is line 2. ऐसे कैसे? अभी तक सॉल्व भी नहीं किए. M2 नहीं पूछ रहा हूँ मैं. I'm just asking how will you write line 2 at the beginning? So minus 9x plus 10y plus 40 equal to 0. Minus 9x plus 10y plus 40 equal to 0. ठीक है. अब ये प्रॉब्लम में byx and bxy पूछा है. They are asking byx and bxy finally. So will you keep it in fraction or will you make it a decimal? If they are asking byx and bxy, so how will you tackle the values? Will it be in fraction की? Will it be in decimal? So I think byx and bxy पूछा है, इसके लिए डेसिमल में लिखना जरूरी है फाइनल आंसर में. फाइनल आंसर में चाहिए तो डेसिमल में लिखो. कैलकुलेशन के टाइम पे फ्रैक्शंस में रखो, लेकिन व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द फाइनल आंसर पुट इट इन डेसिमल्स. इज दैट ओके? हेलो, इज इट ओके? फाइन. ठीक है. लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. 5 मिनट का ब्रेक ले लेते, देन विल कंटिन्यू. सो विल प्रोसीड नाउ. आर यू अंडरस्टैंडिंग रिग्रेशन? समझ में आ रहा है क्या? द प्रॉब्लम्स दैट वी आर सॉल्विंग, आर यू फाइंडिंग इट इजी? प्रोसीजर्स सब दिमाग में बैठ रहा है क्या? ओके. क्या लेंदी वेंदी कुछ नहीं. इससे बहुत बड़ा बड़ा लेंदी प्रॉब्लम्स अभी मैथ्स 1 पेंडिंग है. ओके. सो डोंट कंपेयर. मैथमेटिक्स 2 तो कुछ भी नहीं है. मैथमेटिक्स 1 जब भी चालू करूंगा तो बहुत बड़ा लेंदी लगेगा. ओके. नाउ सी, लेट्स राइट अ नोट. लेट्स राइट अ नोट. इफ लाइन, फर्स्ट नोट,
ax plus by plus c equal to 0 is y on x. Then byx is equal to slope, which is equal to minus a by b. आइडेंटिफाई कर नहीं रहे हम लोग, बोल रहे हैं प्रॉब्लम में कि ये पर्टिकुलर लाइन y on x है. We are not identifying. It is given a particular line is y on x. Second, if line ax plus by plus c equal to 0 is x on y, then bxy equal to 1 upon slope minus by minus by. Have you understood this? You're supposed to copy this. समझा जैसा कुछ नहीं. It is a note. You are just supposed to use it. अभी कॉपी करो. When we are solving the problems, that time how to apply these notes, it will be more clear. Like when we are solving the problems, how to apply the notes will be more clear. अभी सिर्फ कॉपी करो. Okay, enough amount of time was given. Let us go to exercise 3.3. Let us go to exercise 3.3. Question number 4. 4 तो हो गया, sorry. Um, I think we should go to question number 8. Question number 8. ठीक है. Should we proceed now? Yeah. So 3.3 का question number 8. In a partially destroyed record, the following data are available. Variance of x is 25. Standard deviation of x calculate करो immediately. Okay. The regression equation of y on x is 5y minus x is equal to 22. So have they given line y on x? Line y on x is given to us. Yes or no? Yes or no? So minus x
plus 5y minus 22 equal to 0. Now this line is y on x. They are saying, they are specifying that minus x plus 5y minus 22 equal to 0 is y on x. वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग ने अज्यूम नहीं किया. So this is not identification process. We don't have to identify. They have mentioned this line is line y on x. So immediately I'm going to calculate byx. Therefore byx is equal to slope minus a by b. So this is minus 1 upon 5, which is 1 upon 5. Have you understood this step? Which note am I using? First note ki second note? First note ki second note? First note. So copy this, come on. Please copy this. Should I proceed? Bolo. Okay. Then line x on y. They are mentioning, we are not assuming. They are mentioning that the second line is x on y. 64x minus 45y minus 22 equal to 0. So what will I calculate? bxy, which is 1 upon slope minus b by a माइनस ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट. ऊपर वाले ब्रैकेट में क्या आएगा? ऊपर वाले ब्रैकेट में क्या आएगा? करेक्ट, माइनस 45 गुड. और नीचे वाला ब्रैकेट में 64 आएगा. सो दिस इज 45 by 64. दिस इज 45 by 64. Okay. First part of the problem, mean values of x and y. How to calculate the mean values of x and y? How to calculate the mean values of x and y? कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो जल्दी बोलो, डोंट वेस्ट टाइम. By solving the two given equations simultaneously. By solving the two given equations simultaneously. Okay. Now let us calculate r. byx into bxy. So this is 1 upon 5 बराबर ना 1 upon 5 into 45 by 64 root 9 upon 64 3 by 8. So r is equal to क्या चाहिए आपको? सर आगे के सम में byx का ये आगे का सम क्यों डिस्कस कर रहे हो? आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम? कुछ भी करते हो. ओके, डोंट आस्क मी अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. वेट. प्लस 3 by 8 का आंसर क्या है?
What is 3 by 8? प्लस 0.375, मतलब 0.38 लिख देता हूँ मैं. R is positive since byx bxy are positive. byx bxy are positive. चलो यहाँ तक समझा क्या आपको? Have you understood this much? Please copy. I'll wait for you. अरे जिधर भी मीन्स मैंने बोला आपको होमवर्क है तो होमवर्क के लिए कैलकुलेट करना साइमल्टेनियसली. Come on, tell me. Should I proceed? आगे क्या पूछा है? Standard deviation of y. If standard deviation of x is 5. Next part of the problem. They are asking standard deviation of y if standard deviation of x is equal to 5. If standard deviation of x is equal to 5. byx लेने का कि bxy लेने का? byx लेने का कि bxy? कुछ भी ले सकते हो. You can take anything. Okay. So let's go ahead with byx r sigma y upon sigma x. Okay. R sigma y upon sigma x. What is byx? Have we calculated byx? If yes, then what is byx? 1 upon 5. R का वैल्यू फ्रैक्शन में लिख दो यहाँ पे. 3 by 8 चलेगा क्या? कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने फ्रैक्शन में लिख दिया. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन 5. 5 and 5 is getting cancelled on both the sides. 5 and 5 is getting cancelled on both the sides. So 8 by 3 is equal to standard deviation of y. Standard deviation of y will be 2.67. 8 by 3 को डिवाइड किया मैंने, 2.666 आता है. That is equivalent to 2.67 if I am not wrong. Chalo, if any doubts, any queries, any confusions, please ask. I'll wait. Otherwise, just copy and wait. क्या चाहिए है तेरे को? Why are you getting so restless? सर मैं बोल रहा हूँ कि पहले जो सम्स थे ना, वो सम्स हम ये नोट से
अरे पहले के सम्स में हम लोग को थोड़ी बताया था कि ये लाइन एक्स ऑन वाई, लाइन वाई ऑन एक्स है। बताया था क्या पहले? आइडेंटिफिकेशन के प्रॉब्लम्स में प्लीज टेल मी एवरीवन, बताया था उन लोग ने कि दिस लाइन इज एक्स ऑन वाई, दिस इज वाई ऑन एक्स। हाँ तो उधर नोट एप्लीकेबल है क्या पहले के प्रॉब्लम्स में? कॉमन सेंस। नहीं तो मैं पहले ही तुम लोग को नोट देके पूरा प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्व करवाता था। क्या तुम लोग भी, है ना? ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। देखो जब भी प्रॉब्लम में दे आर नॉट मेंशनिंग विच लाइन इज वाई ऑन एक्स एंड विच इज एक्स ऑन वाई, जब भी सुनो मेरा बात बराबर से। इन अ क्वेश्चन, इफ दे आर नॉट मेंशनिंग अबाउट द लाइंस की लाइन वन इज वाई ऑन एक्स और लाइन टू इज एक्स ऑन वाई, ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं कर रहे, तो ये नोट्स वहां पे काम पे आएगा कि नहीं आएगा? ये जो नोट दिया है, विल इट बी एप्लीकेबल और नॉट? मेंशन नहीं किया है तो, हाँ, मेंशन नहीं किया है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पे कौन सा मेथड आएगा? M1 M2 वाला मेथड आएगा, याद है? इतना प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व किया राइट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। M1 M2 वाला प्रॉब्लम्स, कंपैरिजन, ग्रेटर स्मॉलर, ओके। और जहाँ पे मेंशन रहता है कि अ पर्टिकुलर लाइन इज एक्स ऑन वाई, पर्टिकुलर लाइन इज वाई ऑन एक्स, वहां पे किसका यूज करने का? उसमें ये नोट आएगा। ठीक है, सो आई हैव मेड इट वेरी क्लियर नाउ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी कंफ्यूजन। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो, एक्स बार और वाई बार कैसा फाइंड आउट करने का, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ विल यू कैलकुलेट, जस्ट टेल मी। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, यू टेल मी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस, दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। ओके, then they are asking byx and bxy. Okay, now see, line x on y, have they mentioned what is line x on y? Yes, the first line given is line x on y, all terms on the left hand side, all terms on the left hand side, line x on y. If we are having a line x on y, which regression coefficient will we get? Byx लिखो कि bxy लिखो, there are two coefficients, so which one should I write? I'll write bxy, x on y ना, तो bxy, one of one slope, second note, minus b by a, minus b by a, line y on x, line y on x, 4y। मेरे को बताओगे तुम लोग लाइन y on x कैसे लिखने का? All the terms on the left hand side, how to write line y on x? Will you help me? Can I write minus 3x plus 4y minus 25 equal to 0?
इसे लिख सकता हूँ, सब टर्म्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लाया, or else you can take that 4y on the right hand side also. So 3x minus 4y plus 25 equal to 0. One and the same thing. It is one and the same thing. Byx slope minus a by b. Understood? समझा क्या? ओके, डेसिमल में क्यों लिख रहा हूँ मैं? मैंने तो पहले बोला था डेसिमल में नहीं लिखने का, फिर भी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को डेसिमल में क्यों लिख रहा हूँ? वाई एम डूइंग दिस राइट नाउ? फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू, आई हैड टोल्ड यू कि डोंट राइट दिस इन डेसिमल, अभी बोल रहा हूँ कि डेसिमल में लिखो. वाई? बिकॉज दे आर आस्किंग व्हाट इज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, पूछा है इसके लिए, अदरवाइज आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम. ओके, ठीक है. शुड वी प्रोसीड नाउ? प्लीज टेल मी. ओके, आर रूट ऑफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई 3/4, क्या कहा तो 1/2 इंटू 3/4, 3/8. एक वैल्यू दिया है उन लोगों ने, तो 3/8 इज इट 0.375? 3/8 का आंसर इज इट 0.375? और ये ऐसे भी कर सकते हैं 0.5, 0.75, 75 इंटू 5, 375. ए 4/3 कैसे रे? कौन बोल रहा है 4/3? हु इज दैट? बोलो किधर है 4/3 इधर? वाई 4/3? बोलो, why have you written 4/3? रेसिप्रोकल किधर? किधर है इधर रेसिप्रोकल? यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे रेसिप्रोकल किधर है? ऊपर रेसिप्रोकल है. अरे मेरे भाई, बी एक्स वाई में रेसिप्रोकल रहता है, बी वाई एक्स में रेसिप्रोकल नहीं रहता. समझा क्या रे? ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे नोट 2 पहले आया, बाद में नोट 1 आया. या आर इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिया है अपने को, दे हैव गिवन अस दिस वैल्यू 0.61. बट देन इज इट अ पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू? इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू? इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू. ओके, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज ओवर ना. 3.3 आई थिंक क्लास वर्क होमवर्क मिला के सब कुछ हो गया ना ये एक्सरसाइज 3.3. ओके, व्हाट अबाउट 3.2? क्लास वर्क होमवर्क मिला के सब कुछ हो गया है क्या? ये यहाँ पे रीजंस लिखो. आर इज पॉजिटिव सिंस dy x and dxy are positive. Please write down the reasons. ओके, 3.2 में क्या पेंडिंग है? 6 and 3 आर पेंडिंग. कहाँ पे गया 3.2? ए प्रॉब्लम नंबर 6 किया है मैंने.
3.2 में प्रॉब्लम नंबर 6 की है। अभी होमवर्क में प्रीवियस लेक्चर से मैंने क्या दिया था मेरे को याद नहीं है। ऐसा आई कैन सी 3.2 में सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आर पेंडिंग, बाकी सब हो गए। ओके, आई एम डिस्कसिंग अबाउट 3.2, second and third problem are pending, बाकी आई थिंक सो आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। 3.2 का बात करो ना, मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज। एम आई करेक्ट अबाउट 3.2? ओके, अभी 3.3 का बात करो, चलो। टेल मी व्हाट अबाउट 3.3? 3.2 में थर्ड नहीं किया, आई नो दैट। 3.2 में थर्ड नहीं किया। 3.3 में थर्ड एंड फिफ्थ सम, थर्ड एंड फिफ्थ प्रॉब्लम। अरे मुन्ना, फिफ्थ प्रॉब्लम तो आज ही की है सुबह को। थर्ड प्रॉब्लम पेंडिंग है, दैट आई नो। ओके, लेट्स गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज। Let's go to miscellaneous exercise. Okay. Question number 4 का second. Now this is a very short numerical. Question number 4 का second. वन तो वो टेबुलर फॉर्मेट है, वो तो पेंडिंग है, वो सब सम्स पेंडिंग है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, line y on x, have they given us line y on x? 3x plus 2y minus 26 equal to 0, have they given us line y on x? Okay, if it is line y on x, what is byx? It is slope minus a by b minus 3 by 2, that's it. We are making use of the, we are making use of what? The note. थर्ड क्वेश्चन यू कैन डू इट फॉर होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर सकते हो, फोर्थ का थर्ड। हाँ, ये डेसिमल में कर दो। राइट राइट राइट, बहुत सॉरी, क्योंकि पूछा है ना बी वाई एक्स। ओके, सो फोर्थ का थर्ड यू कैन डू इट फॉर होमवर्क। फोर्थ का थर्ड यू कैन डू इट फॉर होमवर्क। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। या, सो लेट अस गो टू फोर्थ का फोर्थ। लेट अस गो टू फोर्थ क्वेश्चन ऑफ
Sub question 4. You know. Chalo. So we'll proceed. Fourth का sub question 4. Yeah. Now see, line of regression of y on x. Line y on x. इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग पहले. बराबर है क्या? लाइन y on x बोला है. So dy(x) is equal to slope minus a by b minus bracket upon bracket 2 by 9. Understood? Have you understood this slide? कॉपी करके हो गया तो बोल देना. Okay. Next step, line x on y. X is equal to y by 2 plus 7 by 6. I'll take LCM. 3y plus 7 upon 6. बराबर है क्या? Is this correct? Therefore, 6x is equal to 3y plus 7. Therefore, 6x minus 3y minus 7 equal to 0. 6x minus 3y plus 7 equal to 0. Bxy. What is Bxy now? You people tell me what is Bxy. क्या लिखना है यहाँ पे? 1 upon slope. Good. What is 1 upon slope? Minus b by यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा. So this will be half. We got byx and we got bxy. We got byx, we got bxy. ठीक है. What are we supposed to find out? What are we supposed to find out? R. Okay. So R is equal to
root of byx into bxy, root of byx into bxy, 2 by 9 into 1 by 2, r is equal to 1 by 9, 1 by 3, r का final answer 0.33, but then will it have a positive sign ki negative sign? It will have a positive sign. R is positive since लिखो बराबर से y it is positive. Just copy this. बोलिए, waiting for you. Are you done with this? Some students they take time to copy. आप लोग का हो गया है क्या? Okay, second part. They are asking, first they have given standard deviation of x square is equal to 4. Therefore, standard deviation of x is equal to root 4, which is 2. Is this clear? Is this clear? Okay. Yeah. Then standard deviation of y square they are asking. They are asking standard deviation of y square. Okay. So byx, take anything byx, bxy, कुछ भी लो. Okay. This will give me what? byx कितना है? What is byx? Is it 2 by 9? r की जगह पे क्या लिखूं? 0.33 लिखूं कि फ्रैक्शन में लिखूं? 1 by 3 लिखूं? 1 by 3 is a better option. Okay. Standard deviation of y upon standard deviation of x. समझ में आया क्या? बोलो. 3 1 जा 3, 3 जा. Standard deviation of y is equal to 4 by 3. ये बराबर आ रहा है क्या तुम लोग को ये? और यू आर यू फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट? आ रहा है क्या तुम लोग को ये? ओके. इज दिस द फाइनल आंसर? फिर फाइनल आंसर लाने के लिए करना क्या है? व्हाट आर वी सपोज टू डू टू गेट द फाइनल आंसर? स्क्वायरिंग. करेक्ट. वाई स्क्वायरिंग. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई स्क्वायर पूछा है ना, इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स.
So just go ahead. Standard deviation of y square equal to, after squaring, what will you write? Standard deviation of y square equal to 16 by 9. Divide करो because they are asking the value. Standard deviation of y square पूछा है. Standard deviation of y square is equal to 16 by 9. Divide करो. I am not solving this. आप लोग को करना है. 1 पॉइंट डिवीजन बराबर से करो. 7777 मतलब 1.78. 1.78. Okay. So I think there are 2-3 numericals which are pending. 2-3 numericals pending है. 1.78 is the answer over here. 1.7777 इसका मतलब क्या है? 1.78. Yeah. So I was discussing that there are only 2-3 numericals which are present that I will do in the next class, followed with tabular format sums. मतलब observations दिया रहेगा calculate करने का. Okay. Yes or no? Okay. Now see, let me ask you a few things over here. What is line y on x? Starting से पूछ रहा हूँ. Line y on x क्या है? What is line y on x? Correct. Line y on x is y depends on x. लेकिन उसका equation क्या है? What is the equation of that line? Is it a y minus y bar equal to byx x minus x bar? Okay. उसमें byx क्या रहता है? What is byx? फॉर्मूला नहीं पूछा. What is byx? Not asking you the formula. byx क्या है? It is called the regression coefficient of y on x. It is called regression coefficient of y on x. Okay. What is line x on y? Is it x minus x bar equal to bxy y minus y bar? And what is bxy? उसमें bxy क्या है? Regression coefficient of x on y. So if you remember, if it is byx or bxy, byx रहने दो, bxy रहने दो, दोनों का दो दो फॉर्मूला है.
one in terms of covariance and one in terms of correlation coefficient R. तो एक फॉर्मूला है कोवेरियंस के टर्म्स में और एक फॉर्मूला है आर के टर्म्स में, राइट। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, हम लोग काफी बार यूज कर रहे हैं। ओके, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में बी वाई एक्स क्या रहता है, वो डू वी राइट फॉर बी वाई एक्स एम वन ग्रेटर देन एम टू या फिर एम टू ग्रेट एम वन लेसर देन एम टू, वो करने के बाद में क्या लिखते हैं हम लोग, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वाई एक्स इज इक्वल टू smaller slope without modulus, smaller slope without modulus. And what is bx square? Reciprocal of the other slope या फिर reciprocal of the greater slope without modulus. मॉड्यूलस का पार्ट को डेसिमल में निकालने का, कन्वर्ट करने का, विदाउट मॉड्यूलस को कभी डेसिमल में नहीं करने का। if a line if a line ax plus by plus c equal to 0 is x on y, सुनो सुनो बराबर से, if a line ax plus by plus c equal to 0 is x on y, so उसके अंदर bxy equal to bxy equal to 1 upon slope, which is equal to minus by. Understood? All these things you need to remember, and then in the next class we'll work on those 2-3 numericals and proceed with tabular format sums. ठीक है, चलो, thank you, bye, have a good day.